All right, people, a very good evening to my lovely set of students. Welcome to this amazing class on your favorite, the perfect stop for NEET journey of any NEET aspirant, the Aakash BYJU'S NEET channel. Yeah, I want to congratulate you and I want to welcome you for being a part of this family. Some of you have been associated with us since a long time and you've seen a change in your life. You've seen a change in your concept clarity. You smile more when it comes to difficult concepts. Yeah, other students, your friends might find them difficult. But since you're a part of this amazing channel and our classes, it's all breezy for you, isn't it? So, welcome once again to the second class of this super important chapter. We had an amazing first class last time. I saw all your comments, I saw all the hearts, I saw all the appreciation, and nothing can be more heartwarming. Yeah, so ma'am tries to reply to all messages on time, but if I couldn't, I haven't been keeping well, then don't worry. I'll be replying to all your comments. Keep putting them in the comment section. Yeah, let me welcome Shagufta, Sachin, Suraj, Nick, Mayank, Siddharth, Sarojini, Juhi, Poonam, Meena, Shiny. Good evening, darling. How are you? You have been regular to the classes since some time. I can notice, I can observe, and you will observe your confidence in the subject is going to grow and grow. Good evening, people. Good evening. Nick, why don't you sit through the class and realize it for yourself? Yeah, that is a good idea. Please don't repeat your doubts. I've answered it. Srashti, Vishal, Bhavesh Kumar. Bhavesh, I'm mostly very good. Yeah, little bit of flu season and it has been raining like anything in Bangalore. It hasn't stopped day and night. So it's the weather is quite damp here. So I think I've caught microorganisms grow more they divide more in moisture kind of areas. So the temperature and moisture is really good for all kind of organisms to proliferate. So it's not just I, but many people are not keeping well. But this will go, right? The class should continue. Aditi, rightly said. The sari. Okay, fatafat share karo session. Kyunki one more reason that I did not cancel this class, even if not feeling well, is this chapter, I tell you, very nice. Yeah, one of my favorite chapters, not because of my personal interest. I love all the chapters equally. As a teacher, that happens when you're teaching for a long time. But this chapter lays the foundation of whatever my kids are going to study in zoology and botany. So when a chapter as crucial as cell division is decided on a day, the temporary and the small physical discomfort of the body couldn't stop me. Yeah, so let's make the most of it of today's session, क्योंकि ये थोड़ा सा लड़ाई लड़के सेशन लिया जा रहा है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. Aditi, I'm absolutely fine. Thank you, Meena. Lovely to have you in the class. I want you more and more in my class. I want all the good students in my class. तो last class में मैंने बताया था, भूलना मत. Yeah, it is all over the Aakash BYJU'S platform because nobody in the country creates such a big opportunity for students who really want to have access to quality education and who want to realize their dreams of becoming doctors, engineers and whatnot. So Aakash BYJU'S, it's a gift to our country. Lakhs and lakhs of students appear for it. And if I talk about the NEET results, if you look at the past 5-6 years also, all the top rankers, the first 3 ranks are from the bag of Aakash BYJU'S. So year and year, we try our best to give you quality education through various tangents, through various sources. So we discuss the rewards of taking up and scoring well in ANTHE. What I want all my children to do right now, as we are talking, click on the link in the description box and enroll for this. Yeah, and like I say, give as many exams as you can in your life.
ये लाइफ के लिए भी सच्चा है और नीट के लिए तो सच्चा है ही। जितनी परीक्षाएं होती हैं ज़िंदगी में, है ना, उतना ही हम तराशे जाते हैं, उतना ही वी बिकम शार्प एंड स्मार्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। एंड आफ्टर ऑल लाइफ शुड बी अबाउट making yourself better, evolving, because evolution is the very, very big truth. Whether you want it or you don't want it, evolution is going to happen. Might as well go through tests. It will be conducted in November. फटाफट enroll करो, देर मत करो. Juhi is saying she has registered already. Yeah, and you have good 3 months. 3 हुआ ना, अभी August है. More than 3 rather, to prepare for this test. Yeah, so people who are coming new to the session, people who are coming new to the class, give me a thumbs up in the chat box if you are new to this series, if you're new to this class. So for you, I'm repeating it, that we have 2 series run. This is the droppers batch. If anybody is a dropper, we have the exclusive droppers batch which was launched on 1st of August. Classes happen on Monday, Wednesday and Tuesday and Thursday. Yeah, that is Monday to Thursday, 2 p.m. and 3 p.m. There are 4 subjects, so 4 classes. And individually, we run series for class 12 students, Mission MBBS 2023. And we have this series, yeah, where you are right now, which is for 2024 aspirants. So it's lovely to have you. And I hope to see all of you regularly in my classes. Don't forget to explore the Aakash BYJU'S app free of cost. Yeah, that is a magic land in itself. So children, if you really analyze, there is no platform in this country who is creating so many. It's like a seed is, it's like a tree full of fruits. Yeah, so go get it. It's all yours. Why not? Why to miss anything? Maybe you're not realizing it now, but I can realize it because I've been a teacher and a student myself. And that kind of student, जिसको हर जगह हर एग्जाम में फर्स्ट आना होता था. या मम्मी तो यही कहती थी, हाँ यहाँ पे भी सेलेक्ट होना है, इसमें भी फर्स्ट आना है, अब कॉलेज में भी फर्स्ट आना है. So if you are really an aspirant, and I say it again, if you are really serious about your future, then this is the best platform. So explore everything that you have. Don't forget to like this session because you love us so much. Subscribe to this channel and hit the notification button on because you don't want to miss any session taken by ma'am and sirs. And if you have any doubts, like you always do, put them in the main comment section. Sooner, later, this way, that way, whenever ma'am is going to reply. Okay? I read all your comments. And if ma'am has not replied, either it's a Sunday or ma'am fell ill. There's no other reason. Okay? So, we were talking about the phases of cell cycle in the last class. Yeah? Remember? And we stopped on mid-prophase. Now people, one more suggestion and something very important that I would like to tell you is that in chapters like cell cycle, if you miss even a single class, if you don't understand mitosis, you're not going to understand meiosis. If you have not understood prophase, you're not going to understand what I'm going to say now. So it's better to be regular. Okay? And this is one of the pain points. This chapter is perhaps the most asked chapter when people are nearing their exam. जब exam pass आने वाला होता है, तो अगर हम बच्चों से पूछते हैं बेटा आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो सेल साइकिल सबसे पहले पॉपअप हो जाता है, क्योंकि बच्चों को रियलाइज होता है कि भाई मेरे को सेल साइकिल नहीं समझ में आया तो मुझे जेनेटिक्स कैसे आएगी, मुझे बायोटेक्नोलॉजी कैसे आएगी, है ना. तो बाद में ये रियलाइज करने का कोई फायदा नहीं है. अभी मैम की बात सुन लो, ठीक है. फायदा तुम्हारा है, मेरे लिए तो मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, है ना. चलो, इंटरफेस को काफी इन डेप्थ हमने समझा था पिछली क्लास में. फिर हमने एम फेज स्टार्ट किया था और एम फेज में अपन कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले करते हैं और उसमें अपन ने प्रोफेज स्टार्ट किया था. अब एनसीईआरटी या अधिकतर बुक्स में प्रोफेज इज नॉट
categorized into early, mid and late. But I personally feel that it is always good to, because prophase is the longest phase. I'm not going to do that in metaphase or anaphase, early metaphase, late anaphase. No, I'm not going to do that. I'm not going to trouble you. But prophase is the longest phase and it is kick-starting the process of karyokinesis. It is kick-starting the process. So we divided it. Okay. So I'm going to do late prophase now. In mid prophase, what happened in mid prophase? If you remember, I made you write it. Every word you wrote with me, that now complete condensation of chromosomes has happened. I finally see the sister chromatids. I finally appreciate the centromere. I finally appreciate the protein disc or the kinetochore. Okay? So now in late prophase, what are the key events? Let's make it very, very easy. In early prophase, we got the aster bodies on the opposite poles. I've spoken about them in detail. What are aster bodies? Yeah? Now people, it's going to be a puppet show which is going to run. I tell you, the entire cell division is nothing but a puppet show. Okay? And who's controlling the strings? They are the aster bodies. The puppeteers are the aster bodies. Now, how the aster bodies will move? Okay, on the opposite pole, this is one pole of the cell, this is another pole of the cell, and the puppeteers, the aster bodies are here. Okay, and the strings are the spindle fibers. Make sense? और puppets कौन है? Chromosomes है. ये जैसे move करेंगे, वैसे ही chromosomes move करेंगे. Okay, now, although you have the asters at the opposite poles with the microtubules radiating from the pair of centrioles, yeah, there's pair of centrioles or one centrosome at each pole. I need to connect them with the chromosomes. So that is going to happen. How do I put it into words? Not in the bookish language, but organization of the spindle apparatus. Spindle apparatus. Or the mitotic apparatus. Now, when I use the term apparatus, it more often than not means multiple units. Bole to microscopic apparatus, telescopic apparatus, this and that. So, this apparatus will have spindle fibers running from one pole to another pole. One pole to another pole. Okay? Okay? And they will also have individual fibers running from one pole to a chromosome, one pole to a chromosome. So, कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि there are continuous spindle fibers. Okay, ऐसे कहीं समझ में नहीं आएगा, सुन लेना. क्लास के बाद नोट्स तो मिल ही जाएंगे. अभी क्या करो, अभी सुन लो, समझ लो. वरना प्रॉब्लम हो जाती है इस चैप्टर में. सो देयर आर कंटिन्यूअस फाइबर्स एंड देयर आर डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स. डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स बोले तो वो फाइबर्स जो भाई दूसरे पोल तक नहीं पहुंच रहे हैं. एक पोल से अगर कोई स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल तक पहुंच रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पोल से वो बीच में रुक गया क्योंकि वो एक क्रोमोसोम के सिर पे जाके, भाई पपेट है, मैं क्रोमोसोम हूं, ओके, मुझे नचाना है अभी, तो मेरे को यहाँ एक धागा फिक्स करना पड़ेगा. अब ये धागा दूसरे पोल तक नहीं गया भाई, दूसरे एस्टर से, तो वो डिसकंटिन्यूअस फाइबर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज माइटोटिक apparatus. व्हाट इज माइटोटिक apparatus? आज के बाद 2 एस्टर्स प्लस द स्पिंडल फाइबर्स. Plus the spindle fibers. Now, very important point in late prophase, everything was happening in the nucleus. Alright? Now, the nuclear envelope, nucleolus will disappear. So, when nuclear envelope disappears, that means nucleoplasm and cytoplasm are going to merge together. So, अगर बुक में ये लिखा हुआ है, there is no distinction between nucleoplasm and cytoplasm in the late prophase, वैसे कोई लिखेगा नहीं. But you know better than others. So, in the prophase, in the late prophase, one cannot see nucleus anywhere.
What are the major constituents of the nucleus? The chromatin fibers. They have condensed, assumed a shape. They have two sister chromatids now. They have one centromere now. Everything is now there in the cytoplasm. अब जगह कैसे आई इतना सब कुछ रखने की मैम? भाई पहले तो लंबे लंबे धागे थे जो एक जगह न्यूक्लियस में ऐसे छुपकर एक नेटवर्क बनाकर पड़े हुए थे. अब आपने उनको क्रोमोसोम्स बना दिया. अब जगह तो आई नहीं भाई, बहुत जगह है सेल में. क्योंकि the very third point is the organelles of the cytoplasm. भाई साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम जगह ऑर्गेनल्स ने घेरी हुई है. ER, गोल्जाई बॉडी, वो सब टाटा बाय बाय, मेरा कोई काम नहीं है. Right now, the cell is going to focus only on division. Okay, so this is the third event. Cell does not show Golgi, ER or anything. These are the two major organelles which disappear. जो भी इंसान मेरे चैट बॉक्स को स्पेशली आज स्पैम करेगा, I will block you from my class. Okay? Makes sense to us? Yeah, I don't want to get angry here. Doesn't do good to me. So, you better be serious because here we study. मुझे नहीं पता आप कहाँ से आ रहे हो. बाकी जगह ये allowed होता होगा. In Aakash BYJU'S NEET, if somebody is not interested in studying, if they're not serious, we don't see them as an aspirant, you might as well be somewhere else. Okay? Yeah. This was the story of prophase. The next phase is the metaphase. Now people, very interesting phase. What did I say? Chromosomes are puppets. And the spindle fibers are the strings. The astrobodies at the opposite poles are the puppeteers. With me? Now, this is something that will happen. This is the key event of metaphase. क्रोमोसोम्स को दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करना है. और अगर मुझे इक्वली, या जब स्कूल में टीचर्स हमारे क्लासरूम में, लेट्स से देयर आर 50 ऑफ अस, देयर आर 100 ऑफ अस, और अगर दो ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, दे टेल अस टू स्टैंड इन अ लाइन फर्स्ट, असेंबल टुगेदर. भाई एक कहीं वहां पे है, कोई एक वहां पे घूम रहा है रूम के दूसरी तरफ, ऑडिटोरियम में कोई वहीं घूम रहा है. Will not be able to form groups, right? So we tell the chromosomes, तमीज से अलाइन हो जाओ एक जगह पे, एक लाइन में, ताकि तुम्हें दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करना आसान हो. So that happens in metaphase. और ये कौन करेंगे? ये स्पिंडल फाइबर्स करेंगे. Okay? स्पिंडल फाइबर्स करेंगे. अब मेटाफेज में भी आपको one thing that you see in metaphase is the very clear-cut structure of chromosome and the number of chromosome in one cell, because now they are at one place. अब यहाँ से जो discontinuous fibers आ रहे थे ना, discontinuous fibers को मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ. भाई ये था सेंट्रोमियर, ओके, ये है discontinuous fiber. याद रखना, एक क्रोमैटिड के लिए, फॉर वन क्रोमैटिड आई हैव वन फाइबर अटैच टू इट. और नचाने वाला कौन है? नचाने वाला ऊपर से कौन है? इस पोल का एस्ट्रोबॉडी. ओके, तो ये कहाँ पे जाके फाइबर अटैच हो रहे हैं? सेंट्रोमियर पर. क्योंकि अगर मैंने सेंटर को ही हिला दिया तो अपने आप पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा. भाई सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, मैंने वहीं पे तो मुझे उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा ना, ताकि क्रोमैटिड्स भी मूव कर जाए. अब अगर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं तो इसका मतलब मिनिमम दो फाइबर्स तो अटैच्ड हैं. इन फाइबर्स को, क्योंकि ये अब अलाइन करवा रहे हैं इक्वेटर पर, हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, कॉल्ड एज. ये एनसीईआरटी से बाहर है. बाद में मत बोलना मैम आपने एनसीईआरटी से बाहर, पढ़ाना पड़ेगा एनसीईआरटी से बाहर, क्यों नहीं? ओके, दोज आर कॉल्ड एज ट्रैक्टाइल फाइबर्स. ट्रैक्टाइल फाइबर्स, ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट द बेसिक. नाउ पीपल, it is not the chromatids which are aligning themselves at the center. As a puppeteer, think like a puppeteer. The center.
The puppeteer is always going to focus on the center. My hands and my legs will follow the center. Okay, so it is the centromeres which align at the equator or the center of the mitotic apparatus. The chromatids are like spatially moving. They are arranged spatially. Whatever is the shape of the chromosome at this point. Okay, now this phenomenon where centromeres are arranged at the equatorial region of the mitotic apparatus is termed as congression. Might as well write it than to regret later. Okay, this is clear. Equatorial plate, keyword number 1, equatorial plate. Formation of equatorial plate by centromeres. It is always the center which will lead the path. As simple as that. Done by tractile fibers. Now, the cytological significance. Cytological significance of metaphase. What is cytological significance? Cytology is the study of the cell. Well, because they are aligned so perfectly at one place in the equatorial region, it is easy to study the number and the external structure, the morphology, the physical structure, not the shape, but just the structure of the chromosome. Do all chromosomes have, okay, how do they look like? What is the number in this cell? What are the two arms doing? Are they equal? Which is the large chromosome? Which is the small chromosome? This kind of study can be done at metaphase. This is a very important question. Okay, so cytological significance is not the shape, but the morphology and the number. And there's a technique where we do that. Biotechnology में भी पढ़ोगे आप. Genetics और biotechnology में called as karyotyping. Okay, तो karyotyping क्यों करी? Karyo बोले तो nucleus. We create a inked version of the chromosomes of a cell by arresting the cell division in the metaphasic stage. मेरे लिए पर्सनली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्यों? जितने भी ऐसे डिजीजेस हैं जो एक बच्चे में when he takes birth and we see some chromosomal abnormality, you will study about chromosomal abnormalities. Okay, in class 12th, Down syndrome, for example, Klinefelter syndrome, for example, and many. I'm going to name all of them because then it will scare you, but I think कुछ समझदार लोगों को मालूम है कि मैं क्या बात कर रही हूँ. तो उसमें to study these diseases in detail, we do karyotyping. We create a karyogram. हम अच्छे से staining techniques use करते हैं. It is a very technical kind of technique, technical kind of procedure. Okay, but हम arrange कैसे करते हैं? According to the size. तो वो साइज हमें कहाँ पता लग रहा है? बाय अरेस्टिंग द सेल डिवीजन एट द मेटाफेज. जैसे इसमें हमें पता लग रहा है कि मेल सेल है क्योंकि आपके पास XY क्रोमोसोम है ना. चलो, वेरी गुड. उसके बाद आता है जी एनाफेज. अब याद रखो कि ये हमने इनको इकट्ठा क्यों किया था इक्वेटर पर. व्हाई डिड वी अलाइन द क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट? Well, to divide them equally into two groups. तो स्कूल में हमें दो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए पहले हमें एक साथ खड़ा किया. So now that division or the distribution, because this is replicated DNA. ये नॉर्मल नहीं है. अभी मेरे पास 4C DNA पड़ा है और सेल के लिए वो नॉर्मल चीज नहीं है. तो वो हमने इक्वली हमें अब डिवाइड करना है. Isn't it? तो anaphase में again the puppeteers, which are the aster bodies, are going to apply this force. You know,
Astrobody number 1, astrobody number 2. These are the puppeteers, always remember. They have spindle fibers or the discontinuous fibers coming from them, yeah, attaching to the kinetochore or the centromere of the respective chromosomes. Okay, and now these astrobodies are going to, the spindle fibers are going to apply this force. अब इससे क्या होगा? इससे इतना force लगाएंगे ये कि chromatids will separate. But actually, chromatids don't separate. You know what separates? Centromere separates. Always remember मैम की बात. मुझे पपेटियर को पपेट को घुमाने के लिए सेंटर पर यहां पर स्ट्रिंग अटैच्ड है. अगर मैं इस सेंटर को डिवाइड कर दूंगी तो एक पंखुरी यहां पे, एक पंखुरी यहां पर. किसको डिवाइड करना पड़ेगा? सेंटर को डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे इक्वल डिवीजन करनी है. Okay, so key point is centromere splits itself into two. Consider this as the chromatid, my hand as the chromatid. कोई फायदा नहीं है इसको अलग करने का. लेकिन अगर तुमने ये सेंटर डिवाइड कर दिया तो ये पार्ट, ये पूरी की पूरी बॉडी इसको हाथ को मिल गई. Then you are like, okay, two Pankhuri Ma'ams are there. Okay, so centromere splits and chromatids follow them. So one chromatid now goes to one daughter cell and the other chromatid goes to the other daughter cell. Who is leading the path? The center, the centromere will lead the path to the opposite poles, and again chromatids spatially will follow them. वो तो बेचारा उससे attached है. जैसे मेरा हाथ मेरे बॉडी के सेंटर से attached है यार. जहां पे ये सेंटर जाएगा ये हाथ जाएगा. That way. Okay? Now, based on the position of the centromere, based on the position of the center, okay, let me read this out for you. During migration, this is one of my favorite lines from NCERT. The centromere of the chromosome feeds towards the poles. But that is, NCERT says that is, they are leading towards the poles. Chromosomes are leading towards the poles. Okay? And the chromatids trail behind. That's all. Now, what are you going to observe in anaphase? Another set of favorite question. By the way, for the new people in the class from cell division, why ma'am is putting so much of effort into this is because we got not one, not two, not three, but 4 MCQs. 4 MCQs सिर्फ इस अकेले चैप्टर से. इसको अभी समझ लो, बाद में देर हो सकती है. So now, based on the position of centromere, based on, this is a very important topic, position of centromere, we encounter the following shapes of the chromosome. Shape of chromosome. अगर MCQ में shape पूछा है तो मार्क करेंगे anaphase. अगर स्ट्रक्चर या नंबर पूछा है तो मार्क करेंगे मेटाफेज. तो ये वाली शेप जिसमें मेटासेंट्रिक शेप होती है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर इज इन द मिडिल. दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर्ब शॉर्टकट notes of shape of chromosome. You're going to love it, but please write it down with me. This is called as V-shaped chromosome. Good. The second is the centromere is away from center. Away from center. That is a L-shaped chromosome. Third is centromere is towards the end. It is not exactly at the end of the chromatid, but it is towards the end, very close to the end. That becomes a J-shaped chromosome. Beautiful. Now the chromosome has finally reached the center. Consider
sorry, centromere. Consider the centromere is sort of playing around. हाँ, यहाँ पे बीच में था, उसको लगा अरे यार थोड़ा सा और खिसक कर देखते हैं, away from the center, अरे थोड़ा सा और, towards the end, finally reach the end. So centromere is at the end. My God, I love when we have notes like this. You guys are so lucky. Yeah, these are 2-3 kinds of questions. In fact, इस अकेली slide में 4-5 MCQ बन जाते हैं. Where do you observe the shape of the chromosome? Position of what? It is based on position of what? What is the shape of acrocentric chromosome? Beautiful. Okay. So at the end, this is I-shaped chromosome. I-shaped chromosome. Krishna, I saw what you're doing in the class. Ritu, Krishna is calling out to you. If you are also wasting time here, please reply back. If you're not, then you know what to do. You are actually. Good, good, good. Very good. Okay. So sister chromatids, what is the key event of anaphase? The sister chromatids separate into 2 identical and independent chromosomes. Half of them reach one pole, यहाँ पे exact half, and the other half reach the other pole. अब क्या होगा? What will happen? Telophase will happen. यार जब anaphase खत्म हो रहा होता है ना, towards the end or late anaphase, the spindle fibers start to disappear. Spindle fibers around aster bodies. अब पपेटियर का कोई काम नहीं रह गया है. यहाँ वाले जो स्पिंडल फाइबर्स थे ना, लेट मी चेंज द पेन, ये वाले सोच कर देखो सेल डिवीजन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर मैंने कॉमन सेंस लगा ली ना, 1 + 1 2 होता है, 10 + 1 11 होता है, इतनी वाली कॉमन सेंस लगा ली तो ये चैप्टर सबसे आसान है. और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसने रटने की थोड़ी सी भी गुस्ताखी कर ली ना, खत्म है, ये हाथ से निकल जाता है. सो दिस चैप्टर इज टेक इट और लीव इट. भाई दिमाग लगा लो, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो तो मैं तुम्हारा हूं, नहीं लगाओगे तो बाय, मैं नहीं आऊंगा समझ किसी भी हालत में, वैसा हिसाब है. अब जो पपिटियर्स थे, और इसको मैं और इजी करवा रही हूं तुम्हारे लिए, यहां पर जो पपिटियर्स थे उनका काम खत्म हो गया. अब मुझे क्रोमोसोम को नहीं नचाना है. I got the 2 opposite poles. Now I just have to align them into 2 daughter cells. So these aster fibers will disintegrate. And here comes the telophase. One way to remember telophase is opposite of prophase. जो prophase में हुआ, early, mid and late, वो सब उल्टा कर देना है. तो स्टार्ट हो जाओ अर्ली से, चले जाओ लेट पर. ट्रस्ट मी, इट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट. ओके, सो टीलोफेज में chromosomes have reached the opposite poles, astrobodies are disappearing now. Okay, disintegration of the mitotic apparatus, puppet show तो खत्म हो गया. और क्या होगा भाई? क्रोमोसोम्स कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे अर्ली प्रोफेज से, और लेट प्रोफेज तक बेचारे कंडेंस होते रहे. तो टीलोफेज में देयर विल बी डीकॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिसअपियरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. आई लव टू keep it in points. Okay, and what will happen? Nuclear envelope, nucleolus will come back. Okay, and what will happen? ये तो एंड में हुआ था, और सबसे एंड में मैंने क्या बताया था, गोल्जाई और ईआर चले गए थे. They will reappear. और क्रोमोसोम्स अब क्रोमैटिन फाइबर्स में बदल जाएंगे.
जहां से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे हम आ गए. ये है कहानी माइटोसिस की. Chromosomes will decondense and you will see the network of chromatin fibers. लेकिन अभी भी एक ऐसा सेल है जिसके दो पोल्स पर क्रोमैटिन फाइबर्स पड़े हुए हैं. दे आर नॉट सेल्स. दिस इज वन सेल विद रेप्लिकेटेड सामान, सारे का सारा. What do? I still need to divide the protoplast. Okay, so there comes the next stage, which is cytokinesis, to give them the individuality of each cell. वरना अगर cytokinesis नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? It will become a multinucleated cell. It will become an abnormal condition. So cytokinesis actually कोई वेट नहीं करता है. ऐसा माना जाता है कि टीलोफेज के चलते चलते cytokinesis or the division of the protoplast, the division of the living component of the cell starts. हाँ, but we know that plant cells have cell wall. Animal cells do not have cell wall. Remember this? We remember this from the last chapter. So plant cells के पास एक extra layer है. So cytokinesis is not same in both plant cell and animal cell. अच्छा, एक important point है, थोड़ा NCERT से बाहर है, इसको लिख लेते हैं. Put a thumbs up in the chat box if you want ma'am to give you a few extra points in the chapter of cell division, a few extra from NCERT. If you guys want it, I'll tell you. Otherwise, it is okay because we are still doing NCERT. Okay, so if everybody gives me a thumbs up in the chat box, I'm going to make you write something extra, which according to me should be in everybody's head. But if you don't want to do it because it's not in NCERT, it is still okay because paper तो NCERT से ही आता है. पक्का promise लिखोगे साथ में? हाँ? और ऋतु क्लास में अटेंटिव रहोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे? सबको देख रही हूँ मैं कौन क्या कर रहा है क्लास में. ओके यार, एक चीज याद रखो कि हो गया. गॉट इट. जो ही पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा है यार. इट हर्ट्स द थ्रोट. बातों में मत लगाया करो मुझे. ओके ऋतु, डन. आई नो यू आर अ गुड स्टूडेंट. आई नो यू विल फाइंड द वे. यार एनिमल सेल्स में ना, अब ध्यान से बात सुनो, सेंटी मत करो मुझे. एनिमल सेल्स में ना सेंट्रियोल्स होते हैं. एक नहीं, दो होते हैं. तो ऐसी डिवीजन को, ऐसे स्पिंडल एपरेटस को जो दो सेंट्रोसोम्स के बीच में बना, इट इज कॉल्ड एम्फीएस्ट्रल. Okay, but in plant cells, centrioles, मैं हट जाऊंगी, डोंट वरी मैम. दिख नहीं रहा, मैं हट जाऊंगी. Centrioles are ILVA, absent. Such a spindle apparatus is called anastral. Spindle fibers align, but they don't have the astrobodies. Okay, so in biology na, an word simply means absent. अब ये कीमती शब्द लिखने के लिए मैम हट रहे हैं. ओ सेंटी की दुकान, हेलो, पी रही हूं पानी. थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मैम. लिख लिया? नोट्स भी मिल जाएंगे क्लास के बाद. दिस वाज द इम्पॉर्टेंट एडिशन दैट आई वांटेड टू डू. नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. इसको लोग पता नहीं क्यों इतना मुश्किल मानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसको क्लियर नहीं करती है. आई विल मेक इट सुपर सिंपल फॉर यू. ठीक है, चलो. सीरियसनेस, आई वांट सीरियसनेस इन द क्लास.
अब देखो एनिमल सेल में द मेथड, पहले टर्म्स पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे, ऑल्दो आई डू द ऑपोजिट, बट ठीक है इफ इट हैज कम. एनिमल सेल में द मेथड इज कॉल्ड फरोइंग और क्लीवेज मेथड. ठीक है. प्लांट सेल्स में इट इज कॉल्ड सेल प्लेट मेथड. इजी, सेल प्लेट मेथड. अब इसको समझते हैं. ज्यादा किताबों में घुसकर, ज्यादा पोथों को पढ़कर ज्ञानी ना बने, कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझें, लाइफ में खुशियां लाएं. ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात. सबसे पहले एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, इट इज यूजुअली अ प्रोडक्ट ऑफ ईआर. ईआर सामान देती है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए. ओके, अब यहां पर इक्वेटोरियल रीजन में बीच में कुछ वेसिकल्स कलेक्ट होंगे, कुछ वेसिकल्स कलेक्ट होंगे जो ईआर दे देगी. ईआर वेसिकल्स में कुछ भी डाल के दे सकती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसने वेसिकल्स दे दिए. अब सेंटर वाले रीजन में माइक्रोफिलामेंट्स, रस्सियां. व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स आर वेरी फाइन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स. इनमें खींचने की शक्ति है. ये एनिमल सेल को इस तरह से खींचेगा, इस तरह से सेंटर की तरफ. तो इधर से एक रस्सी आई, मान लो ये एक एंड है सेल का और ये दूसरा एंड है, ऐसे खींचा. ओके, और इधर से सेल के दूसरे एंड से रस्सी ने ऐसे खींचा. सो नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ सेंट्रीपिटल फरो. सेंट्रीपिटल तो उसका डायरेक्शन है, लेकिन एक फरो बन गई ना, एक ऐसे काटने वाली चीज बन गई ना. हेंस इट इज कॉल्ड एज फरो मेथड और द क्लीवेज मेथड. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्लीवेज? इट इज सेंट्रीपिटल. और फिर खत्म कहानी. सेंट्रीपिटल इज द डायरेक्शन. इस तरह से वो उसको बीच में टुवर्ड्स द सेंटर काटती जाएगी. दैट्स इट. यू आर कटिंग इनवर्ड्स. You're not cutting outwards, you're cutting inwards. चमका, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता. अब प्लांट सेल में उल्टा होता है यार. तो मेरे को यहां पे बनानी है सेल वॉल. सेल वॉल की पहली लेयर होती है मिडिल लेमिला. हाँ मैम, सुना सुना तो लग रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं पता. यहां पे सामान देता है गोल्जाई. ओके, तो यहां पे वेसिकल्स कलेक्ट होते हैं भाई. ओके, और यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट आर स्पिंडल fibers that collect in the center. टर्म इंपॉर्टेंट है. स्पिंडल फाइबर्स खींचने के लिए जरूरी है. सेंटर में आके अलाइन हो गए. इस फ्रैग्मोप्लास्ट के ऊपर गोल्जाई ने पेक्टिक कंपाउंड्स डाल दिए. मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट. सेल वॉल मिडिल लेमिला उसी की बनी होती है. अब ये एक प्लेट बना लेंगे. सो ऑन फ्रैग्मोप्लास्ट cell plate or middle lamella is formed. लेकिन इसकी डायरेक्शन ये सेल को कैसे काटेगी? सेंट्रीफ्यूगली, अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल मैनर में सेल कट जाएगा दो पार्ट्स में. इसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड. इंदु बेटा, फ्रैग्मोप्लास्ट आपको याद तो नहीं करना है. ऑल आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इज Golgi takes part and it is called as cell plate formation, but I'm still telling it क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये term मिल जाएगी. Let me explain it to you, but don't take it too much onto your head and heart. So
prior to cell plate formation, no Indu, cell plate is basically, it will be full of calcium and magnesium pectates. Golgi is giving the materials. And why it is called plate? Because plate, it's very hard. It has the calcium compounds, right? Phragmoplast is, prior to this deposition by Golgi, no, spindle fibers are going to align themselves in the center so that this thing can happen, this cutting of the cell, this stretch can happen. So that is called as phragmoplast. Some authors say phragmoplast is formed by Golgi. Somebody is saying something else. Don't get confused. You just remember it is cell plate method, Golgi is taking part, and life is okay. Cool? If karyokinesis is not followed by cytokinesis, then we'll have the syncytium or the cyanocytic condition. Cenocytic bhi bolte hain log. Cenocytic condition, as in fungus. Okay? Syncytium is seen in coconut endosperm. If you're not aware what is coconut endosperm, don't worry at all. Please be regular to the channel. Whenever we do this chapter of coconut endosperm, which we are doing right now, sexual reproduction in flowering plants, तो सब समझ में आ जाएगा जिसकी class Wednesday को है. Okay people, so that was it from my side as far as cell division is concerned. We have completed mitosis and cytokinesis. Next we are going to do meiosis from the next class. It is a super important class where we will do prophase 1. Prophase 1 is the most confusing topic of meiosis. Please do not miss that class. I say don't miss any class, physics, chemistry, biology. If you are new to the channel, subscribe to the channel so that you don't miss any class. Like all the sessions and share it with all family and friends because this is the platform, yeah. From here we produce rankers. I'll see you in the next class. Take care of your health and keep smiling. If you have any doubts, put them in the main comment section and don't worry at all. Thank you.